Now let's start working on some examples at how we can find out a solution of non-homogeneous system of linear equations. For that, let's look at this first example. Test the following system of equations for the consistency, that we have to check whether the system of equations are consistent or not, and hence solve means we have to also find out the value of the variables x, y and z. For that, let's write the system of equations. X plus 2y plus z is equals to 3. Then next three equations are also there. So the system is like that. There are four equations in three variables. If you see, there are four equations in three variables. Now we will write these equations in the form of a matrix. Ax is equals to b, where a is कोफिशिएंट मैट्रिक्स. यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है ना, उनको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए. लाइक कोफिशिएंट ऑफ x1 written here, then coefficient of y, then coefficient of z, and similarly for the other equations. फिर यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे x y z, और हमारे पास है देन राइट हैंड साइड में कॉलम वेक्टर 3 5 2 4. अब हमने करना क्या है, लाइक वी ऑलवेज डू, वी विल convert this matrix into echelon form, as with the help of echelon form we can find the rank of a matrix. रैंक निकालना ना हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको echelon फॉर्म में बनाना, चेंज करना स्टार्ट कर देंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. हमने क्या करना है, वी विल अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन दिस मैट्रिक्स ए एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू echelon फॉर्म. अब इसको अगर echelon फॉर्म में बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम में इन थ्री प्लेसेस पे जीरो बनाएंगे. वी विल कन्वर्ट दिस 2 3 एंड 3 टू 0 विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. अब देखो ऑपरेशंस कैसे लगेंगे, 2 को 0 करना है, फॉर दैट r2 माइनस 2r1, देन फॉर दिस 3 r3 minus 3r1, then for 4 r4 minus 3r1. जब आप ये ऑपरेशंस लगाओगे, आफ्टर अप्लाइंग दिस वी विल गेट अ ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स लाइक दिस, एंड द सेम ऑपरेशंस टू बी अप्लाइड ऑन राइट हैंड साइड एज वेल. नो ऑपरेशन टू बी अप्लाइड ऑन दिस वेरिएबल मैट्रिक्स. बच्चे यहाँ पे एक्स वाई जेड के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, ऑपरेशन सिर्फ लगेंगे आपकी ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके ऊपर, और एक जो आपकी राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है इसके ऊपर, सिर्फ इनके ऊपर आपने ऑपरेशंस लगाने हैं. अब नेक्स्ट तीनों प्लेसेस पे जीरो आ चुका है. द नेक्स्ट टारगेट इज टू कन्वर्ट दिस -11 टू 0 एंड देन दिस 3 टू 0. अब इन दोनों को जीरो बनाएंगे. फॉर दैट अगेन वी अप्लाइड द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. रो ऑपरेशंस आर अप्लाइड हियर, r3 minus 11 times of r2 and r4 plus 3 times of r2. See, we can't use r1 here, because if we will use r1 then these zeros will be again disturbed. Okay, so after applying the operations we got two zeros in second column as well. Now the last step is to convert this -4 to 0 so that we can have the desired echelon form. For that again a row operation is applied, r4 plus 2r3. So we applied the operation, and as you can see we have achieved the echelon form of matrix A. And remember, we are applying the operations on right hand side as well, don't forget about this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो the matrix A is now in echelon form. Now we will discuss the cases, that what is the rank of matrix A and what is the rank of augmented matrix B. Now if you see here, the matrix A is written here, this is the matrix A, and what will be its rank? Rank means number of non-zero rows in echelon form. Now how many non-zero rows are here? 1 2 and 3, because the fourth one is completely 0 na, we will not count that. So rank of A is equals to 3. Now if we talk about augmented matrix, augmented matrix क्या होगी, 1 2 1 3 0 -1 0 -1 0 0 2 4 0 0 0 and 0. Now this is the augmented matrix, right? Now what is its rank? Again the number of non-zero rows, which are also 3. Augmented matrix का rank भी कितना आ रहा है हमारे पास, 3. Rank of A is also 3. And how many variables we have? X, Y, Z. They are also 3. Number of variables 3. So this falls under which category?
So if we see here, we have rank of A same as rank of augmented matrix, same as number of variables. It means for this problem we have unique solution. It means the system is consistent and we have unique solution. तो इतना तो हमें पता लग गया कि जो सिस्टम है वो हमारा कंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज टू find out the value of x, y and z, that is to find out the solution. We have figured out the nature of solution, that the solution is unique, but also we need to calculate the value of x, y, z. For that what we will do, now we will convert this matrix system into the system of equations. ये जो हमने मैट्रिक्स में बनाया था ना, पहले इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स में बनाया, we converted the system of equations into the form of a matrix. Now what we will do, we will convert this matrix into the form of equations. फिर से इनको multiply कर दो, multiply this coefficient matrix with the variable matrix, equate it to right hand side and we will get back again the equations. So when we multiply those and simplify them, we get these three equations. Now we can easily solve these three equations and we will get the desired value of x, y and z. Like you can see from last equation we will get z is equals to 2. From the second equation we get y is equals to 1. Put the value of y, put the value of z in the first equation, simplify this and you get the value of x. So we get the desired solution, which is x equals to -1, y is equals to 1 and z is equals to 2. I hope it's clear to everyone. Still, if you have any doubt, let me know. We will work on then some more examples. Now let's have a look at question number 2, in which again a different set of equations are given to us and we are going to find their solution. So first of all, we will from the beginning we will work similar way. पहले तो हम वैसे ही मैट्रिक्स लिख लेंगे. कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई हमारी, वेरिएबल मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में कॉलम वेक्टर है. We will start converting this matrix A into echelon form. So I am not going to give now more emphasis on these steps because we have already discussed many times. Now we will go directly. So operations लगाए हमने. So operations are here: r2 minus 3r1, r3 minus 7r1, and we will apply the required operations as per our requirement. And we are here. Now I will go directly explain the conclusion part. So we are here. This is the एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए. यहाँ पे अब हमारी एक्लन फॉर्म बन चुकी है क्योंकि इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते हैं. एंड यू कैन सी द लास्ट रो इज कम्प्लीटली जीरो हियर. नाउ व्हाट विल द रैंक ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए? नॉन जीरो रोज 1 2. We can't count this is zero row na, so the rank of A is equals to 2. But if we look on the augmented matrix, if we talk about the augmented matrix, it is 1 minus 4 7 8 0 20 minus 23 minus 18 0 0 0 and minus 35. ये हमारी augmented matrix है. This is the augmented matrix and what is its rank? Rank is equals to 3. Why? Because there is a non-zero entry present there ना, minus 35. तो इसका रैंक कितना आ गया हमारे पास 3, जबकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है 2. रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू rank of augmented matrix. It means the system is inconsistent or we can say the system has no solution. इसका कोई solution ही नहीं exist करेगा. So it means we are unable to find the values of x, y, z which satisfy the three equations simultaneously. मतलब हमें x, y, z की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं जो इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे. Okay, don't do this silly mistake that you are then solving it for x, y, z. Because the system is inconsistent na, we can't have any solutions, so our question stops there. We are not going to start working on now changing it to equations and calculating for x, y, z. Don't do that. Now let's have a look at this third example, in which again a system of equation is given to us and we are going to check on the nature of solution and also if the solution exists the required values of x, y, z. Again we will start in a similar way. We will write the coefficient matrix A, then the variable matrix, right hand side column vector B, start applying the row operations to get the desired echelon form, and again we arrive at equation number 1. Now we will discuss the nature of ranks.
If we look at the matrix A, what is the rank? Number of non-zero rows. First row, second row, not going to count the third one because it's completely zero. So rank of our coefficient matrix is 2. And similarly, if we look on the rank of augmented matrix, that is also equals to 2. आप देख सकते हो लास्ट रो वहाँ पर भी ज़ीरो बन रहा है, तो पूरी रो ज़ीरो हो गई है. इट मीन्स जो अगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक भी कितना आ रहा है हमारे पास 2 ही आ रहा है. बट हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव? X, Y, Z. Three variables. Variables are three, but the rank of matrix is 2. So we can say rank of A, rank of augmented matrix is less than number of variables. तो ये किस कैटेगरी में आ गया अब हमारे पास? रैंक इक्वल तो है दोनों मैट्रिसेस का, बट जो वेरिएबल्स हैं उससे कम है, उनके काउंट से कम है. सो आवर सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, बट द सिस्टम इज ऑल्दो कंसिस्टेंट बट इट्स हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दैट. So what we will do? Again, from equation number 1 we will convert again back this matrix system into the system of equations. तो यहाँ से हम इक्वेशंस को जनरेट कर लेंगे एंड वी विल गेट टू इक्वेशंस ओनली, बचे नॉट थ्री, बिकॉज द लास्ट रो इज कम्प्लीटली जीरो. दिस विल गिव अस सिंपली जीरो इज इक्वल्स टू जीरो. उसमें तो जीरो ही मिलेगा ना हमें. सो वी आर हैविंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड वी हैव टू सॉल्व देम. For that, let us consider z is equals to t where t is any real number. t हमने कोई भी arbitrary number ले लिया है. t is arbitrary number belonging to real numbers. z की ये value हमने assume कर लेनी है. We will assume z is equals to t. Now put this value in equation number 2 and calculate the value of y. Do the necessary simplifications. Once you are done with the value of y and z, from equation 1 calculate the value of x. The calculation part is shown here, you can check that. So we get the solution. X is equals to 3 minus t by 4, y is equals to 1 plus 5t upon 8 and z is equals to t. Why we are saying that these are infinite solutions? Because see, the solutions will vary as we start working on the changing the values of t. देखो अब यहाँ पे t को 1 चूज करो, आपको एक अलग सेट मिलेगा solutions का. Put t is equals to 2, you will get a different set of equations, सॉरी डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस. आप जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको उस तरह से उस अकॉर्डिंगली यू विल गेट द वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. इट मीन्स आवर सिस्टम हैज़ infinitely many solutions because we can assign infinite many values to this t because t is a real number. Accordingly we will get infinite many values for x, y and z. So this was all about how we can solve the problems of non-homogeneous system of linear equations, and we have discussed all the three cases in which we have unique solution, infinite solutions and no solutions. In the next video we will cover some more examples in which sometimes some unknown constants are given to us in the equations and we have to find them for various cases, like for unique solution, for infinite solution or no solutions.